Okay, assalamu alaikum everyone. We have most of the people here now. I hope the others will join soon as well. So let's start. So we were doing K nearest neighbors last time, and we stopped at this third point where we were talking about how we can choose what is the optimal value of K that we're using. So let me quickly remind you of what it was all about. So we started with this example first. कि आपके पास, let's say you have a data like this, where you have an output variable that is, in this case, it was food type, for example, and you have some input variables, sweetness and crunchiness in this example. How can you predict what fruit type it is based on these variables? So इसका तरीका क्या था? We said that we can measure the uh, distance between whatever is our new uh, uh, data point. For example, like अगर आपने यहाँ पे predict करना है कि आपका tomato जो है, is that going to be classified as a fruit or a vegetable or a protein? तो आप क्या करेंगे? You look at which other substances, which other ingredients are closest to it. So इसमें different options हो सकते हैं. You may want to look at only a single nearest neighbor. आपको one nearest neighbor की आप बात कर सकते हैं, and you may just look at that single neighbor and decide based on that कि अच्छा अगर nearest neighbor जो है वो fruit है, तो tomato is also going to be a fruit. The other option could be you look at two neighbors that are closest to you, two other data points that have the smallest distance from you, and you could choose based on कि उन दोनों में से जो है अगर तो वो दोनों एक ही सिंगल क्लास को रेफर करें, तो वो हो सकता है अगर वो एक एक है तो then it could be any one of them randomly. If you have three, if you're looking at three nearest neighbors, again use the same process. आप उसमें देखते हैं कि जो majority neighbors हैं वो किस category के हैं. So for example, in this case, if you were looking at three nearest neighbors, two of them were fruits, one was protein. तो आपने कहा कि जो है since the majority category is fruit, तो आप tomato को भी as a fruit categorize करेंगे. So this was what the idea was. Then we looked at the formal algorithm के mathematical terms में वो किस तरह से चल रहा होगा, distance measures कौन से use करेंगे. We talked about Manhattan distance, Euclidean distance, किस तरह एक में absolute value होती है, एक में जो है वो squares use करते हैं और उसका square root लेते हैं बाद में. So that was the first thing कि distance measures कौन से use कर सकते हैं. The second thing was distance find करने से पहले आपको एक चीज का ख्याल करना होता है, and that is that all the variables, all the input variables that you're using, they should be comparable. उनकी range जो है वो similar होनी चाहिए. ये नहीं हो सकता कि for example in this particular case आपकी अगर जो sweetness के numbers हैं, they are from 1 to 10, crunchiness is from 1 to 10. आपके पास अगर कोई ऐसा variable और होगा which has a very large range, for example अगर आप spiciness variable आप ऐसा add करते हैं that could take values from 0 to 15 million. अब इसमें क्योंकि range बहुत ज़्यादा है, this might end up getting a lot of weightage in your algorithm और बाकी सब जो है वो ignore हो जाएंगे. तो it's essential कि आप ये algorithm run करने से पहले you scale the variables, उनको आप एक similar स्केल पर लेकर आए. और उसका तरीका हमने देखा था कि we have two methods. We can either use min-max normalization that is that you would use when the data does not have any outliers. The min-max normalization would work fairly well in that case. And the other possibility was z-score normalization, and this would be appropriate when you have some outliers in the data. The second thing we talked about was कि आपको ये देखना है कि अगर आपके predictors जो हैं
वो बाइनरी प्रेडिक्टर्स अगर के आ जाते हैं या कैटेगोरिकल प्रेडिक्टर्स आ जाते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करते हैं. एंड वी डिस्कस्ड हाउ वी कैन यूज डिफरेंट डमी वेरिएबल्स फॉर दैट, टू अकाउंट फॉर दैट कि उन टेक्स्ट वेरिएबल्स को, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को आप किस तरह से इन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो या ऑर्डिनल वेरिएबल है या नॉमिनल वेरिएबल है, किस तरह के वेरिएबल है. तो हर वेरिएबल की टाइप के लिए आप डिफरेंट तरह के डमी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं. Now the third thing that we started talking about was okay, how do we choose what value of k we should choose. Okay, आप one nearest neighbor use करेंगे, two nearest neighbor use करेंगे, 10 nearest neighbor use करेंगे. How do you figure that out? Because that was the next point. And for that, I reminded you of this bias variance trade-off that we discussed at the very start when we started machine learning. Bias variance trade-off या फिर overfitting or underfitting a trade-off जो था. It turns out in k nearest neighbor, if the value of your k is very small, for example, the smallest value could be 1, कि आप सिर्फ एक nearest neighbor को देख रहे हैं, it turns out you have overfitting in your model, क्योंकि आप सिर्फ एक closest value को देख रहे होते हैं, तो your resulting algorithm is very random. कि आप क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहा, जो भी उसके क्लोजेस्ट वैल्यू आती है उसमें सिर्फ उसको कंसिडर कर लेते हैं. उसकी वजह से आपका जो फंक्शन बनता है दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी complex, and you also have a lot of overfitting there. When the value of k is relatively large, as in if it's too big, in that case it turns out that you have underfitting in your data, in your results. The point is, how do we find the optimal value that lies somewhere between those two extremes? So as we discussed, जैसे जब आपका k जो है वो large होता है, you have some underfitting. When your k is small, you have overfitting in your model. The optimal value is going to lie somewhere in the middle, and I told you that generally जो है एक thumb rule होता है in k nearest neighbors कि आपकी जो optimal k होता है, that's going to be somewhere around this number, that's square root of n. So for example, if you have a data that has around let's say 1000 values या 100,000 values, अब 100,000 आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, 100,000 रोज हैं, तो उसमें the rule of thumb would say कि आप जो है you would you might want to use 100,000 का square root, so that's 100. So you may want to use 100 nearest neighbors for your model. So that's just a thumb rule, but आप सिर्फ इसको या डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे. What you actually do is कि आप अपने डेटा के ऊपर टेस्ट करेंगे कि which k performs best on your data. ठीक है? So we have discussed this earlier as well. So one possibility could be, one naive idea could be कि आप जिस डेटा के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर, so remember आपके पास हमने ये देखा था कि आप अपने मॉडल को डिफरेंट सेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं इनफैक्ट फॉर रनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स. सो वन आइडिया कुड बी कि आप जिस डेटा के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल को, यू सी के कौन सा के जो है that performs the best on that training data. So how would you find out कि कितना वो मेजर क्या हो सकती है जिसको आप यूज करेंगे to find out how well your model is performing? You could be looking at, for example, the percentage of correctly classified values. तो हमने वो देखा था different classification measures. You could be using any one of them. So one possibility could be कि आप जो है वो percentage correctly classified use कर रहे हो. In that case, it turns out कि जैसे जैसे आपका k जो है वो छोटा होता जाएगा. So look, focus on the axis here. यहाँ पे शुरू में आपके पास large k है, and then as you go right, your k keeps on decreasing. अगर आप ट्रेनिंग डेटा के ऊपर
बेस्ट के फाइंड कर रहे हो, you you'll figure out at the end कि the smaller your k is, the better your model generally is going to be. In fact, the extreme case could be कि जब आपका k की वैल्यू 0 हो जाए, कि आप जो है जीरो का मतलब है कि आप अपने आप को देख रहे हो, तो सो आपके ट्रेन डेटा में क्योंकि ऑलरेडी इनपुट्स भी हैं और आउटपुट्स भी ऑलरेडी हैं, राइट? सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के कुड बी जीरो इन दिस केस। और आप जीरो का मतलब क्या होगा कि आप जो है जो ट्रेनिंग डेटा जो है वो अपनी ही आउटपुट वैल्यू को जो है वो देख के उसी को सेम को प्रेडिक्ट कर दे। इन दैट केस योर क्लासिफिकेशन एरर would simply turn out to be 0% because everything will be classified correctly. So that's not a very good idea because आप ट्रेनिंग डेटा तो आपके पास आप लर्न ही उस पे के ऊपर कर रहे हो, तो it's not a very good idea to be measuring your errors on the same data as well. तो इसके लिए हमने पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि what we instead choose to do is कि आप इसको different sets के अंदर divide कर दें, right? So in order to choose the best K, what you practically would be doing is कि आप अपने data को different parts में divide कर देंगे, right? So you could be talking so let's say आपने सिर्फ अपनी अभी जो है your purpose is only to build a model, build a k nearest neighbors model and choose the k that performs the best on your data, और फिर उस k को यूज करना है आपने फ्यूचर के अंदर, ठीक है? in the current scenario you're not currently interested in कि आप अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस एस्टिमेट करें, ठीक है? तो फ्यूचर परफॉर्मेंस एस्टिमेट करनी होगी, उसके लिए हमें टेस्ट डेटा पे चाहिए होगा। लेट्स अज्यूम के अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ऑल वी नीड टू डू इज कि हमें अपना बेस्ट के चूज करना है, ठीक है? उसके लिए व्हाट वुड यू डू, you would split your data into two different parts. Now one possibility could be that you use 80-20, use an 80-20 split. You could choose 70-30, you could choose 1/3 and 2/3 and 1/3. So it depends on the choice that you make there. And then what you do is you train your data, you train your training data for each of those cases. So आप k की value 1 choose करें, k की value 2 choose करें, k की value 3 choose करें, and so on until let's say आप n तक जो है जो भी आपके total number of rows हैं आप वहां तक सारी values check कर सकते हैं. So that's one possibility. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके पास 100,000 रोज का डेटा है, it could take forever कि अगर आप 1 से लेकर 100,000 तक सारे केस ट्राई करें, that will not be very efficient. That's where that thumb rule actually turns out to be very useful कि जो आप ये यहाँ पे k की वैल्यूज ट्राई कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, they could be values that are close to that square root of n. So for example, आपके पास 100,000 rows का data हो अगर, the square root of 100,000 turns out to be it's not 100 actually. So let's say आपके पास 10,000 का data हो, 10,000 का data है, so 10,000 का square root will turn out to be 100. So your thumb rule says कि आपका जो best k होगा, it's going to be somewhere around 100, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप 100 के आसपास बहुत सारी values जो हैं try करेंगे. So let's say you could attempt, for example, 75 nearest neighbor, 80 nearest neighbor, 85 nearest neighbor, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. अब ये इस तरह की let's say 10-12 different k की values choose कर लेते हैं और हर एक के ऊपर आप जो है अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है? Now you could think of it as 10 or 12 different models essentially. कि आप 10 or 12 different models जो है वो estimate करें अपने डेटा के ऊपर. For each of those models then you would test the accuracy on the validation data. ठीक है? Validation data क्योंकि आपने ट्रेनिंग फेज में यूज नहीं किया था, it's untouched as of now. तो आप इसके ऊपर उसको टेस्ट करें, उसको वैलिडेट करेंगे उन सारे मॉडल्स को, and you'll see whichever model performs the best on this validation data. तो उसमें जो k की वैल्यू आपने यूज की है, आप उस वाले मॉडल को यूज कर लेंगे, उस k को चूज कर लेंगे for your model eventually, ठीक है? So let's say आपको 95k वाला
model is performing the best, तो आप 95k को use कर लेंगे उसके लिए, ठीक है? So this is how you're going to choose a value of k. Yes, Azhar, you're right. So 100,000, because sorry, it should have been 10,000. So 10,000 may have 4 zeros. So uska jo square root aega, that's going to be 100. I should have said 10,000 instead. Javeria, how k equals 0 can be minimum value. Yes, so that doesn't make a lot of sense, right? So that's what we said. कि training data के अंदर जब आप k की different values check कर रहे होंगे, so the best result is going to be when you have k equals 0, because then you're just using your own result, and that doesn't make sense. So that's why we said that we should instead be using the validation, this training set and validation set approach instead, and this is the better idea. And this is what you do in practice कि आप इनको split करके इसको use कर रहे होंगे. This is not trial and error as such. So machine learning में basically आप अगर trial and error जिस sense में आप बात कर रहे हैं, so this is how machine learning actually works कि आप data के ऊपर test करते हैं. So it's not based on some sort of theory. आप जो भी model build करते हैं, you test that on some unseen data and you see कि अच्छा ये कैसा perform करेगा, because really you cannot do much better than that. आपका task भी क्या है eventually, आपके पास फ्यूचर में unseen data होगा, उसके ऊपर आपने predictions करनी है. And that's what we are trying to do कि unseen data के ऊपर कौन सा model सबसे बेहतर perform करता है. Right now, if you mean कि trial and error में आपको बहुत सारी values जिस तरह से individually manually attempt करनी पड़ेंगी, so you could just run a for loop there, right? आप जो है वो for loop में लगा दें कि अच्छा ये 15 जो है values पे different models train करके उसके हर एक के results जो है आप check कर लें, और जो भी आपका highest है वो आपको output मिल जाए कि अच्छा इस K पे आपको best results मिल रहा है, right? Yeah, so it does mean a lot of iterations, but you don't have to do it manually. You can just run a loop for that. Yes, Azhar, essentially जो है आप इसको वही समझ लें कि आप जो है data table की बात कर रहे हैं उस तरह से. So yes, that's what it really means. लेकिन डेटा टेबल के अंदर जो आपकी आउटपुट आ रही होंगी वो आपका अब उस मशीन लर्निंग मॉडल की आउटपुट होगी, राइट? सो मशीन लर्निंग मॉडल जो आपका आउटपुट दे रहा होगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी. अच्छा, so this is how it essentially works then कि आपका ये जो blue line है यहाँ पे, that actually represents your errors on the training data, and this red line here represents your errors on the validation data. So training data के ऊपर तो as you keep on decreasing your value of k, आपके errors decrease ही करते जाएंगे on average, ठीक है? But on validation data, there's going to be some point after which your errors are actually going to start increasing again. So आपका optimal value is going to be somewhere in this region in the middle. ठीक है? So this is just for understanding. Eventually आप कर क्या रहे होंगे? आप कर वही रहे होंगे कि you'll be testing for all these values of k, and you'll be choosing whichever value is performing the best. You could also make a graph out of this like this. आपके पास अगर आपने 15 values check किए हैं, तो आप 15 values यहाँ पे x-axis पे plot करके you could plot their classification errors like this, and you could see कि अच्छा trend क्या है generally, कहाँ पे आपका error ज़्यादा थे, कहाँ पे आपको optimal value मिल रही है दरमियान में कहीं पे जाके, right? So you could visualize this like this as well. But again, whichever, for example, let's say मेरे यहाँ पे the lowest error is somewhere around, lowest error on the validation data is somewhere around 10%, right? Now, can I say in future my model is going to have an error rate of 10%? Well, we cannot be sure about that as of now, because validation data को use करके हमने ये lowest k वाली value check की है. So validation data itself is now contaminated. So it's not
इट्स नो लॉन्गर अनसीन डेटा जब आपने इसको यूज करके ये बेस्ट मॉडल सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करना हो कि अच्छा अब ये मॉडल मैंने चूज तो कर लिया, अब ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, यू वांट एन एस्टिमेट ऑफ दैट, उसके लिए you cannot say you could expect the same performance this 10% on future data. उसके लिए अगर आपको future data को क्या error भी estimate करना होता, you would instead choose to divide your data into 3 different parts start में ही, कि आप training, validation और test data के अंदर split करते हो उसको, ठीक है? So everything until this validation step will remain the same. You'll be training your data on this, you'll be validating the different values of k on this validation data and choosing whatever performs the best on this validation set. So let's say आपको k की value 95 जो हमने choose की, that is giving you the best result until this step. अब आपको उस k की 95 की जो value है, उसकी अगर future performance test करनी होगी, you'll be running that model with running the 95 nearest neighbor model on this whole data now and testing that on this new unseen data जो आपने पहले एक टेस्ट डेटा अलग से सेपरेट किया हुआ था, इसके ऊपर आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस क्या आती है, and whatever is the percentage error or the accuracy percentage on this test set, that is what you can claim कि अच्छा आपका जो है मॉडल जो है वो इतना accurate है on unseen data, right? So this is what you would be using for estimating future performance. All right. Okay. So इसको हम जनरलाइजेशन एरर भी कहते हैं, जो आपका टेस्ट सेट के ऊपर परफॉर्मेंस होती है। जनरलाइजेशन एरर बेसिकली मींस कि आपका जो मॉडल है वो कितना अच्छा जनरलाइज करता है on some random data that might appear in the future, right? So that's what it means. So in almost every case, आपका जो टेस्ट सेट वाली परफॉर्मेंस होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज द वैलिडेशन सेट्स परफॉर्मेंस। तो अगर आपने लेट्स से ये k की वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यहाँ पे बस ग्राफ में जो शो है, लेट्स से इट्स समवेयर अराउंड 46 या 48। सो इस 46 या 46 को अगर आपने ट्रेन किया दोबारा से इस पूरे डेटा के ऊपर, तो जब टेस्ट सेट पे परफॉर्मेंस आप उसकी मेजर करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ बिट हायर। ये ग्रीन डॉट might represent कि उसकी actual जो performance आती है test set के ऊपर, so let's say it's about 14%, so that would be your estimate of the model's performance in future. ठीक है, that's what you would quote somewhere if you had to. अच्छा, so this is how you can basically run a k nearest neighbor model when your output has to be some categorical variable. ठीक है, आपने classification model run करना है जब। अब इसके अंदर you also get you can also talk about some 2 terms here. One is propensities या confidence values for predictions, and this basically means कि जब भी आप कोई चीज किसी पॉइंट के ऊपर आप जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, so for example if I were to go back to our example here कि ये इस 3 nearest neighbor मॉडल में for example एक तो हमने ठीक है इसको क्लासिफाई कर दिया टोमेटो को कि it's going to be a fruit because 2 out of its 3 nearest neighbors are fruits, तो हमने टोमेटो को क्लासिफाई कर दिया एज अ फ्रूट। ठीक है, एक तो ये क्लासिफिकेशन होगी। अब इसके साथ यू कैन ऑल्सो कम अप विद सम कॉन्फिडेंस नंबर्स के हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, हाउ प्रोबेबल इज इट कि आपकी ये क्लासिफिकेशन जो है दैट इज करेक्ट, एंड दैट कम्स आउट ऑफ कि आपके यहाँ पे जो आपके मेजॉरिटी वैल्यूज हैं वो कितनी हैं आउट ऑफ द टोटल। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस 2 out of the 3 neighbors were fruits, जिसकी बेस पर आपने क्लासिफाई किया उसको एज अ फ्रूट, तो यू वुड से there's a 67% probability
there's a 66.676% probability that this is a fruit. Now, since this is more than 50%, इसलिए आप इसको classify कर रहे हैं यहाँ पे as a fruit because that is the highest probability among the three cases, three options that you have here. कि fruit की probability सबसे ज़्यादा है, that's 67%. So, in addition to classification here, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? You can also come up with these confidence values, जिनको हम propensities भी कहते हैं, या confidence value. So this is the formula that you use for that. So number of nearest neighbors that have that category Y, जो आपने predict किया, the majority category, out of K, यानी जितने neighbors आप total consider कर रहे थे, ठीक है? That's going to give you the confidence in your classification. So for every new data point, it could be different, right? So there could be some data points जहाँ पे आपकी classification probability is, let's say, 90%. उसको भी आप fruit, let's say, classify कर रहे हैं, और tomato के case में it's 67%, उसको भी आप fruit classify कर रहे हैं. But of course, your confidence in both of these categorizations is different. 90% वाली classification के बारे में you would be more confident as compared to 67% वाली classification. Okay, so that's one thing that you also can get as an output out of this k nearest neighbors method. और एक और चीज आप इसमें specify इस तरह भी कर सकते हैं कि sometimes you don't want कि आपके पास अगर 50% से ज़्यादा जो है वो एक कैटेगरी की probability है तो बस आप उसको बस वो assign कर दें. You instead want to be more sure about it. So for example, कोई ऐसा diagnosis है जिसमें the cost of a wrong categorization could be huge. In that case, you may in fact choose to assign some cutoff values there. So for example, अगर आप इस तरह की कोई disease diagnose करें, you would want to be very sure that you are diagnosing it correctly. So you may define some sort of a cutoff कि अच्छा अगर आप इतने ज़्यादा probable हैं, so let's say I can, yeah. So let me write down here if I can. Yeah. So let's say HIV ki bajaye, let's say you're talking about COVID. Now in this case, the cost of wrong categorization could be huge. So let's say if somebody is actually infected and your test turns out to be negative, and their test turns out to be negative, that could have a huge cost. They could just go around without taking any precautions because they thought they were negative. So they could end up infecting a lot of other people because of that. So in this case, you may instead choose to have some sort of cutoffs. Okay, let's say you would only classify somebody negative if, let's say, they have less than a 30% chance of being positive, right? So instead of having a cutoff of 50%, you could choose to do it like this. And similarly, you could say you would only classify someone as positive if they are let's say greater than there's a 70%, more than 70% chance of them being positive, right? So this would be classified as in fact this will be classified as negative. So इसको आप क्या करेंगे? Less than 50% पे you would classify negative, and greater than 70% पे you could classify positive. And you could have another categorization कि अच्छा अगर 30% से 70% वाली range है, इसके अंदर you may say कि you're not sure about it, right? So you're unsure about it, and you could say you should still take precautions. We're not classifying you as positive, but you should still be
you should be taking, you should still be taking precautions in terms of uh, your social life generally. ठीक है? Okay. Now, so these are the two things that you should consider there. So that was where you can use k-nearest neighbors for classification. Now you can also use k-nearest neighbors for regression, and this is how you would do that. The only difference in this case is going to be कि आपकी जो outcome है, now that is numerical instead of categorical. तो वहां पे पहले क्या था, your predictors could, आपके जो predictors हैं या input variables हैं वो पहले भी numerical भी हो सकते थे और categorical भी हो सकते थे, उसमें कोई जो है restriction नहीं थी पहले भी, but लेकिन आपका output variable जो था that was a categorical variable वहां पे. In this case जब आपका regression k nearest neighbor की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो outcome है that's going to be numerical, right? So the methodology here is going to remain exactly the same. आप उसी तरह से आप अपने जो है distances measure कर रहे होंगे between your inputs, और न्यू इनपुट के लिए भी आप उसी तरह से डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसी तरह से स्केलिंग करेंगे, उसी तरह अगर आपके पास कैटेगोरिकल इनपुट्स हैं कहीं पे या बाइनरी इनपुट्स हैं, उसी तरह से उसकी आप डमी वेरिएबल्स क्रिएट करके इंक्लूड करेंगे अपने मॉडल के अंदर. लेकिन जो आपके नियरेस्ट नेबर्स एंड पर आएंगे, आप क्लासिफिकेशन में क्या करते थे, यू वुड बी लुकिंग एट द मेजॉरिटी क्लास. आपके पास अगर 3 नियरेस्ट नेबर्स थे तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा उन 3 में से मेजॉरिटी की कौन सी कैटेगरी है, राइट? दिस इज हाउ यू यूज्ड टू डू इन क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में जहां पे आपका न्यूमेरिकल आउटकम है, यहाँ पे आप इंस्टेड क्या करेंगे, जितने भी आपके वो नियरेस्ट नेबर्स हैं, आप उनकी जो आउटकम्स हैं, उनके जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है, उनकी आप averages ले लेंगे. So let's say you are talking about 3 nearest neighbors. So आप क्या करेंगे, उन तीनों जो आपके nearest neighbors हैं, उनका जो आउटपुट वेरिएबल है, उन तीनों की आप एवरेज लेंगे और आप इस न्यू डेटा पॉइंट के आउटकम को वो एवरेज असाइन कर देंगे उन नियरेस्ट नेबर्स की. दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. ठीक है? ओके. is it clear? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ये एवरेज क्यों लेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एवरेज क्यों लेंगे? यस सर. Because that's the most reasonable thing that you can think of here. Do you think there are other options जो हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? आपने बेसिकली देखा कि नियरेस्ट नेबर्स जो हैं उनकी क्या आउटकम्स हैं. आप अगर 3 नियरेस्ट नेबर्स की बात करें, आप सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? You have 100 different stores. There's a company that has 100 stores across a city. उनको जो है वो सेल्स का डेटा उनके पास है about all of those 100 stores. अब उन्होंने एक नया स्टोर जो है एक कहीं पे ऐड करना है, उसकी एक सर्टेन लोकेशन है, उसका साइज होगा, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होंगे. तो वो क्या करेंगे, दे माइट चूज टू, इफ दे वांट टू एस्टिमेट फॉर एग्जांपल कि अच्छा इसकी सेल्स कितनी होंगी in the first month, in the next month, let's say, if they choose to use a k nearest neighbors method, और उसमें वो let's say 5 nearest neighbor use कर रहे हैं, तो वो देखेंगे अच्छा which 5 other stores are most similar to this new store.
बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, वो सारे डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करके उनके डिस्टेंसेस मेजर करके जिनके 5 लोएस्ट डिस्टेंसेस हैं इस न्यू स्टोर के साथ, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, के नियरेस्ट नेबर मेथड को यूज करते हुए वो क्या कर सकते हैं, उन 5 स्टोर्स की जो सेल्स हैं उनकी जो एवरेज आएगी वो इस नए स्टोर के लिए वो प्रेडिक्ट कर देंगे, राइट। if you think there's another option that you could choose here, uh, do let me know. तो फिर आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या आप कर सकते हैं? yes फिर हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा वो स्टैंडर्डाइज कंपेरेबल्स के ऊपर होगा ना, जो हमने पहले बात yes की। yes तो हम उसको एज ए वेटेज नहीं यूज कर सकते हर जो बिल, के बिल, नेबर की वैल्यू की। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, that's also a good idea. तो it really depends कि आप नेबर्स जो हैं वो कितने यूज करें। सो अगर तो आपका नंबर ऑफ नेबर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर तो सिंपल एवरेज से भी जो है इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू गिव यू अ फेयरली गुड रिजल्ट। अगर आप वेटेज जो है असाइन करना चाहते हैं, योर एक्यूरेसी माइट इन फैक्ट इम्प्रूव देयर, लेकिन आपके सिर्फ इसका मसला सिर्फ ये होता है कि आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है वहां पे। But that's a perfectly good idea, and you could instead choose to assign uh, uh, choose to use a weighted average here, and that's totally fine. Yes, you can do it. Yes. तो उसमें कोई ओके मसला सर। नहीं। अच्छा, अब इसमें क्लासिफिकेशन के केस में आप जो डिफरेंट के की वैल्यूज को में से चूज करने के लिए you would be using a performance measure that is used for classification problems. For example, वहाँ पे हमने पीछे क्या use किया था, the percentage of classification errors या percentage correctly classified, or from the other available options that you have जो हमने पहले cover किए हैं, उनमें से आप कोई भी use कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप के best के choose कर रहे होंगे तो इसमें जब आप compare करेंगे different models को, that's going to be based on some performance measure that is applicable for regression problems. So for example, one of the measures that's most commonly used is mean squared error, MSE. तो आप इसकी basis पर उनको compare कर सकते हैं, and you would be choosing the K that is giving you the least mean squared error. ठीक है, on the validation set of course. ये भी आप training set के ऊपर अपना models run करेंगे सारे, लेट्स से आपके पास 15 डिफरेंट मॉडल्स हैं, उन सबको वैलिडेशन सेट के ऊपर जो है वैलिडेशन सेट के ऊपर उसकी प्रेडिक्शंस करेंगे, एंड यू विल चेक कि उन 15 में से विच मॉडल इज गिविंग यू द लीस्ट मीन स्क्वायर्ड एरर्स, और उस मॉडल को आप चूज कर लेंगे। और अगर आपको फ्यूचर में परफॉर्मेंस मेजर करनी है उसकी, तो आप टेस्ट सेट के ऊपर उसको जो है फ्यूचर परफॉर्मेंस उसकी टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस है। आप इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप आउटपुट जो है वो न्यूमेरिकल है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग यूजिंग अ मेजॉरिटी क्लास आप एवरेज आउटकम्स के एवरेज ले रहे हैं, और जो आप परफॉर्मेंस मेजर यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो आप मीन स्क्वायर्ड एरर, या यू कुड चूज सम ऑफ द अदर मेजर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एज वेल, उनमें से आप कोई यूज कर रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इन द प्रोसेस remains exactly the same. Nothing is changed. Acha. Now, just very briefly, some advantages that you have when you're using k nearest neighbors, and some disadvantages as compared to the other machine learning models that are available. So this is one of the most simplest machine learning models, and but even considering that, it's very effective in many cases. ठीक है, तो आपकी जो accuracy होती है, that's generally fairly good in this. It has a very fast training phase. इसका मतलब basically ये होता है कि जब आप train कर रहे हैं ना model को, you'll figure out when you actually go, if you choose to follow this career path, and you actually use it practically later on
in your job, for example, आपके पास जो डेटा सेट्स होते हैं they are huge data sets, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका जो मॉडल रन होने में कितना टाइम ले रहा है। तो ट्रेनिंग एक इसके दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि ट्रेन जब आप कर रहे हैं मॉडल को उसमें कितना टाइम लग रहा है, और फिर जो है जब आप एक्चुअली मॉडल को रन कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है। बोथ ऑफ देम शुड बी fairly the time should not be very long। आप जो है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं जनरली। के नियरेस्ट नेबर्स के केस में द ट्रेनिंग पार्ट, जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे, दैट्स वेरी फास्ट, बिकॉज उसमें आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपको जो है ट्रेनिंग डेटा आपने स्टोर ही करना होता है। कोई भी कैलकुलेशन ट्रेनिंग फेज में एज सच नहीं हो रही होती। जब आपके पास एक्चुअली आपने प्रिडिक्शन करनी होती ना, तब जो है आपका सारी कैलकुलेशन होती है हो रही होती है, बिकॉज जब आपके पास एक न्यू डेटा पॉइंट आता है तभी आप सारे डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। ट्रेनिंग फेज के अंदर आप सिर्फ मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, स्केलिंग वाला पार्ट कर सकते हैं कि आपने पूरे डेटा को स्केल कर लिया। उसके बाद जो डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो तभी होंगे जब आपके पास एक न्यू डेटा पॉइंट आएगा, बिकॉज डिस्टेंसेस आपने किसके साथ मेजर करने हैं, आपने न्यू डेटा पॉइंट के साथ ही डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। तो जो ट्रेनिंग पार्ट होगा दैट्स फेयरली फास्ट, लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखें जो क्लासिफिकेशन फेज है, जहाँ पे आप एक्चुअली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट्स फेयरली स्लो, बिकॉज सारी कैलकुलेशन उस फेज के अंदर हो रही होती है जब आप डिस्टेंसेस सारे मेजर करते हैं उसके साथ। ठीक है, सो that this is a disadvantage कि classification phase बहुत slow है, but on the other hand this is an advantage कि आपका training phase is fairly fast। The ideal of course is going to be कि आपके दोनों जो हैं जो है they are relatively fast, but this is how it works for k nearest neighbors। It's non-parametric approach। non-parametric approach क्या होती है कि आप जो है अपने independent variables और dependent variables के दरम्यान में you do not cannot infer anything कि अच्छा कौन से independent variables का ज्यादा impact हो रहा है आपके dependent variable के ऊपर। All you can do is कि आपकी predictions जो हैं वो कितनी accurate है। लेकिन it's also useful in that sense कि non-parametric methods generally they work much better on large data sets as compared to parametric approaches। Parametric approaches कौन सी होती थी, जो आपके regression models होते हैं, because वहां पे आपने आपका जितना मर्जी डेटा बड़ा होता जाए आप लर्न इतना नहीं कर रहे होते इन रिग्रेशन। आप कि बहुत सारी assumptions जो हैं वो ऑलरेडी बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स जो है वो उस मॉडल के अंदर होती हैं। आप डेटा को इनकॉर्पोरेट करके बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते उसको। नॉन पैरामीट्रिक अप्रोचेस जनरली perform much better on large amounts of data। So that's another advantage in case of k-nearest neighbors। But there are some disadvantages then। So non-parametric approaches क्योंकि it does not offer insights into the relationship between your independent variables and your dependent variables। So that's a disadvantage that's going to be there for most of the machine learning models, because ज़्यादातर आपके models जो हैं वो आपको ये relationship कोई नहीं बताते। They only make good predictions। And then you have to choose a k first। तो आपको before even comparing with, let's say अगर आपके पास एक option है k nearest neighbor run करने की और कुछ आपके पास और machine learning models की भी options है, तो even before comparing a k nearest neighbors with other models, आपको पहले k nearest neighbors के अंदर ही आपको बहुत सारे different models को compare करना होता है कि आपको वो suitable value of k choose करनी होती है। Right, and then there's some pre-processing required in terms of scaling। So scaling जो है आपको सारे machine learning models में नहीं चाहिए होती। Machine learning models run fairly well even without scaling। कि आपके अगर different variables की ranges अगर different भी हैं, so a lot of machine learning models
would still work well, लेकिन k nearest neighbors के अंदर आपको पहले जो है scale करना पड़ता है data. Then there's something that's called curse of dimensionality. अब इसमें there's actually some theory behind it as well, लेकिन I did not want to go into too much detail there because बहुत ज़्यादा वो mathematical or complex हो जाते हैं. All you need to know in this case regarding curse of dimensionality is that in many machine learning models, if the number of variables that you have is very large, तो after some point ना आपके मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह से कम होना शुरू हो जाती है. So in general you would hear कि अच्छा जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होता है उतने ज़्यादा आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी होती हैं. The larger the data that you have, the better your performance is going to be. So that's true in most of the cases. लेकिन जब आप number of columns की बात कर रहे होते हैं, number of variables की बात कर रहे होते हैं, so when you're going from a small number of variables to a relatively large number of variables, तो वहाँ पे आपकी performance gradually improve hoti hai. ठीक है? So let's say you have 5 variables in a model, you have 10 variables in another model. In most of the scenarios, in almost all cases, the one where you have 10 variables is going to perform better अगर वो सारे 10 variables जो है वो relevant है आपके output के लिए. But after some point, let's say आपका अगर number of variables बहुत ज़्यादा increase करना शुरू हो जाते हैं, after some point जो आप जितने variables add करते जाते हैं ना, आपकी model performance actually जो है वो थोड़ी decrease करना शुरू हो जाती है. So you could think of it like this कि let's say आपके पास आपने sales predict करनी है, आपके पास 50 possible variables हैं जो उन sales को affect कर सकते हैं. ठीक है? Now, all those variables do not have the same impact on sales. Some of them are more relevant, some of them have more impact, and others do not have as much impact. So let's say आपने 15 variables ऐसे choose कर लिए हैं that you think have the highest impact, right? अब वो variables आपकी sales के अंदर जो majority variation है ना, उस सब को वो incorporate कर रहे हैं already. अब उससे ज्यादा कोई ऐसे वेरिएबल्स आप इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं जिनका सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट तो है, लेकिन वो ऑलरेडी किसी ना किसी और वेरिएबल में जो आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए, वो ज्यादातर इम्पैक्ट वो ऑलरेडी उस बाकी वेरिएबल्स ने एक तरह से इनकॉर्पोरेट कर लिया हुआ है. तो उस केस में जितने आप वेरिएबल्स इंक्रीज करते जाएंगे ना, आपका मॉडल यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि वो और कंफ्यूज होता जाएगा कि अच्छा ये जो नए वेरिएबल्स हैं दे आर गिविंग सम कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू what the model already knows from the other variables. So essentially what you need to know is that in most of the models you would basically want कि आपका जो number of variables है ना, they are as small as possible. So you would want to incorporate everything that's relevant, but at the same time you would want the number of variables to be as small as possible. तो ये एक तरह से conflicting goals हैं. But essentially what you want to do is कि जितने ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा relevant variables हैं, you use them first, and then gradually जो इतने ज़्यादा impact नहीं कर रहे आपके मॉडल के ऊपर, you exclude them. ठीक है? So k nearest neighbors method के अंदर ये इसका impact जो है वो relatively as compared to some other models ज़्यादा होता है कि आपके जब इसमें number of dimensions increase करती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके results जो हैं वो थोड़े से खराब होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है? That's what you need to know about. अब इसमें इसके बैकग्राउंड पे कुछ थ्योरी है कि वो क्यों होता है लार्ज डायमेंशंस के अंदर जो है ये परफॉर्मेंस किस तरह से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है.
but we would not be going into that theory there. But you should still know कि cursive dimensionality जो है इस term का मतलब ये होता है कि आप के number of variables जब increase करना शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा तो आपकी performance जो है वो adversely affect होती है. ठीक है? Dimensionality comes from dimensions. Dimensions is another name for variables, features. Okay, it comes from that. So large dimensionality would mean that you have a large number of variables. So that's what cursive dimensionality means. कि आपकी अगर dimensions बहुत ज़्यादा हैं, your model is not going to perform as good after some point, after some cutoff point. Some of the real life applications that K-nearest neighbors is very commonly used for optimal character recognition. Many of you, I think, would know about it. OCR, आपके अक्सर जो है PDF file, PDF readers के अंदर भी होता है, where you can read text from images या handwriting को जो है उस तरह उसमें convert करना या number plates जो आपकी cameras read करते हैं उसके लिए भी use होता है. Facial recognition, recommender systems, it's used in these applications very commonly, and there are of course a lot of other applications as well. Okay, so this is one machine learning model that you need to know of. That's one of the most commonly used models and one of the simplest to use as well. So I'll take a few seconds break here, and before we move to another model, that's classification and regression trees, decision trees भी कहते हैं जिसको. But before that, let me know if you have any questions until now जो हमने अभी discuss किया. सर ये नॉन पैरामीट्रिक कैसे थी? हमारे Because you पास can तो वो डिफरेंस लेने के लिए वो फिक्स नहीं पॉइंट्स होते. डिफरेंस लेने के लिए पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन आप एट द एंड, फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जांपल की बात करें, you do not have any sort of measure at the end कि ये टोमेटो ने टोमेटो आपने या इनफैक्ट टोमेटो भी नहीं, आपका जो पूरा मॉडल है उसमें स्वीटनेस ज्यादा होगी तो या स्वीटनेस ज्यादा होने से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फ्रूट या प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रोटीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वेजिटेबल कितनी बढ़ जाती है, कितनी कम होती है. You do not get any such output from this. जिस तरह रिग्रेशन में होता है ना आपके पास कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इतना इंक्रीज करे तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका 1 यूनिट चेंज हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इफेक्ट आएगा. सो इस केस में k nearest neighbors and in fact most of the machine learning models do not give you any output like this के अगर मैं sweetness को 1 यूनिट बढ़ा दूं, what impact would it have on my classification? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट जो है वो किसी जो है स्पेसिफिक नंबर से बढ़ जाएगी या प्रोटीन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. वी डोंट गेट एनी सच इंफॉर्मेशन. तो ये इन्फेरेंस वाली बात की वजह से हम नॉन पैरामीट्रिक कह रहे हैं. Yes, so this is what inference is, right? कि independent variables और dependent variables के दरमियान में क्या relationship है. That's what inference means. So inference आप नहीं कर सकते इसके अंदर. So that's why it's called a non-parametric approach. Right. Thank you, sir. ठीक है. अच्छा, so we won't be covering a lot more. अभी मैं आपको सिर्फ एक introduction दूंगा जल्दी से regarding decision trees, but the complex part there is going to be covered in the next session. So abhi sirf ek simple sa basic sa introduction hai. You might not have to use your brain a lot for that, so it's okay. Acha, let me share the next file. Yeah. Okay, so another type of model, another machine learning model
that's used for prediction is decision trees, and it's also a very common model. इसके अंदर भी you have two different types of trees. You have classification trees and you have regression trees. So first of all, let's think about classification trees. So just a very simple example. So many of you are in your final years. Most of you are in your third year. You will soon be going in the job market and you will be looking for jobs. So let's say आपने जो है कहीं पे अप्लाई किया है बहुत, या in fact let's say आपने multiple जगहों पे अप्लाई किया है. How do you choose? How do you generally choose के आप जो है वहाँ की पे ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? So generally there are a lot of factors that you consider, right? अब उसको एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी सोच सकते हैं कि अच्छा आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है that is salary, right? That's going to be the first deciding point, the first factor that we'll be looking at. So the first factor would be कि आप salary देखें. So let's say your minimum criteria is कि आपको जो है so we're talking about UK here. So let's say अगर आप UK apply करते हैं कहीं पे, so वहाँ पे your minimum this minimum salary on which you might choose to accept an offer is, let's say, £40,000 a year. अगर उससे कम होगी तो you would say you'll decline the offer. So ज़्यादा होगी तो then you'll consider some other factors. ये आपके first जो है वो filter pass कर लिया. अब उस पर next filter होगा, okay, how far is it from your commute? So let's say you have some relatives living there. You want to save your cost of let's say accommodation costs, और आप वहाँ पे उनके साथ रहेंगे. तो you want to factor in कि अच्छा वहाँ से जो आपका ऑफिस है वो कितना दूर होगा. So the next factor could be whether the commute is less than an hour or more than an hour. If it's less than an hour, you would. In fact, I think it should be the other way around. Okay, yeah, it's fine. So if commute is less than an hour, if it's not less than an hour, you would decline the offer. Otherwise, you'll go to the next filter. So let's say this is just a random filter, whether they offer free coffee or not. So let's say they do not offer free coffee and you really wanted that. So let's आप ये filter हो सकता है कि आप अगर वो नहीं offer करते, you could decline the offer. अगर वो भी करते हैं तो that will be the final thing that you are considering, and you would accept the offer. So this is how we generally actually think as well. लेकिन अगर इसको आप structured way में करें तो you could list down all the factors like this कि आप one by one वो सारे factors में yes no कर रहे होते हैं कि अच्छा ये मेरा जो है वो condition meet हो रही है, ये नहीं हो रही. तो based on all of that you come up with some sort of decision at the end. This is the whole idea of decision trees here, of classification trees here. We think about it very similarly. ठीक है? Acha. Now, yeah, of course, people, your manager, the work environment, all of those are the most important things. But this is just for understanding how trees work. Let's consider the same tree. In fact, इसमें ये जो decision points हैं यहाँ पे जो rectangles में show किए हैं इनको we call decision nodes. When you're taking some decisions, जो last nodes हैं where the nodes that do not have any further children, जो green में show किया हैं, these are called leaf nodes. ठीक है? And this first node at the top, that's called the root node. तो अगर आप, this is sort of an inverted tree. जिसमें root सबसे ऊपर है, and then you have leaves at the bottom somewhere. ठीक है? जहाँ पे आपके decisions ले रहे हैं कोई भी, they are called decision nodes, and then the final outputs are called the leaf nodes. Okay, now let's consider this example. This will be the last thing that we're doing today. So you work for this Hollywood studio, and you need to you have a lot of different movie proposals, and you want to decide whether they are worth pursuing or not. Okay, अब इतने ज़्यादा proposals हैं that it's very difficult for you
to go through the proposals in detail. तो आप क्या करते हैं क्योंकि let's say proposal जो है it's a very structured proposal जिसमें आपके पास ये information जो है अलग से given है कि estimated budget क्या है on the x-axis here that you can see here, and the number of A-list celebrities. So I'm not sure what categorization this is, but let's say these are some top celebrities. So the number of top celebrities they have in that particular proposal. So these are the only two factors that you're considering, or इनके basis पर you want to predict whether the movie is going to be a success or not. Okay, so let's say you have three categories of measuring success. So you have one category that's box office bust, so that's a flop. You have mainstream hit, and then you have critical success. So these are the three options that you have. Okay, these are the three outcomes that a movie could have. Okay, just in तीन चीजों में आप categorize कर सकते हैं उसको. Now, since you are not going to read the whole proposals, आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अच्छा, these are the two inputs that I'm going to consider, और इनकी basis पर मैं इनको जो है assign कर दूंगा one of these three categories. ठीक है? Now, what you could do is you could think of it like this कि अच्छा अब मेरे पास देखें 4 quadrants बन रहे हैं यहाँ पे, right? This is low के the estimated budget is also low, and the number of celebrities, the number of top celebrities, that's also low. Then this is where the number of celebrities is high, the estimated budget is low. In these two quadrants, the estimated budget is high, but the number of celebrities is low for this bottom one and high for this top one. ठीक है? तो आप ये देखें top right के ऊपर जो सारी ये movies हैं, most of them are mainstream hits. So what does that mean? So this is the highest success a movie can get. In them, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि estimated budget भी high है और number of celebrities, number of top celebrities, number of A-list celebrities, they're also high. So both of them, when both of them are high, that gives the most success. But after that, you see, जो critical success वाला part है, उसमें the number of celebrities seems to be more important as compared to the budget, right? So, because even if the budget is low, but you have a high number of A-list celebrities in that movie could still have some success. So that's what a critical success means. That it's somewhere between the mainstream hit and a flop. Okay, it's getting some success at least. Okay. So even if the budget is low, but the number of A-list celebrities is high, you still have some success. However, if the number of A-list celebrities is low, it doesn't matter. Even if you have a very high budget, you are still going to have a flop at the end, most likely. Okay? There are of course some exceptions in all quadrants. यहाँ पे भी आपके पास एक critical success है. You have a mainstream hit here as well. जहाँ पे आपके celebrities इतने नहीं हैं. But overall, the trend seems to be like this. ठीक है? So what you could do is you could say आप अपने data को split कर लें. आप जो है one possibility could be कि आप A-list celebrities के ऊपर जो है अपना cut off लगा लें कि वो लो है या हाई है. ठीक है? This is what this line represents. So आपके पास दो options है. पहला जो है split करने के लिए कि पहली चीज आप किसको importance देंगे. So you have two choices, right? So the two choices are, you either look at the number of A-list celebrities first. The second possibility is that you look at the estimated budget first. कि estimated budget वो high है या low है. ठीक है? इन दोनों में से एक चीज आप कर सकते हैं, right? So how would you choose between this?
the idea is कि आप देखेंगे कि किस स्प्लिट से आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट सम कैटेगरी. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस, इस स्प्लिट के बाद जो आपने दो स्प्लिट्स हुए हैं, ऊपर वाली जो सारी मूवीज हैं, we have 9 critical success, we have 9 mainstream hits. तो critical success और mainstream hits को तो आप कुछ खास जो है उनको differentiate नहीं कर सकें. However, you do not have any movies that are flops here in the top part here, and all of the movies that are blockbuster busts are at the bottom here. तो आपने उसको completely classify कर लिए है यहाँ पे correctly. ठीक है, so that's some piece of information that you're getting. So यहाँ पे, since the time is running out, so I'll be quick about it. So यहाँ पे आपको बहुत काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है स्प्लिट से कि आपने सारी जो फ्लॉप कैटेगरी वाली मूवीज थी उनको आपने ऑलरेडी जो है वो अलग से क्लासिफाई कर ली, उनको क्लासिफाई कर लिया अलग से. ठीक है, so then once you're done with that, so let's say आपने ये चूज कर लिया split out of the two possibilities, आपने ये चूज कर लिया. Now the next possibility could be the next option would be कि आप एक split यहाँ पे ऊपर कर लें. एक ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे नीचे स्प्लिट कर लें. ठीक है, these are the two options that you have now. So which one is giving you the most useful information? जब आप ऊपर वाली को स्प्लिट करते हैं, आपकी क्रिटिकल सक्सेस मेन स्ट्रीम हिट राइट साइड पे आ गई, मोस्टली क्रिटिकल सक्सेस लेफ्ट साइड पे आ गई. सो दिस इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे अगर आप नीचे स्प्लिट करते हैं, it's not giving you a lot of new information because right side पे भी आपकी जो है वो mostly box office busts हैं. यहाँ पे left side पे भी आपके पास mostly box office busts हैं, so you're not able to differentiate them very well. तो जो पहला वाला possible split था, you would choose to use that split. इसी चीज को अगर आप as a tree represent करें, यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये रिप्रेजेंट करें कि आपने किस तरह से इनको क्लासिफाई किया. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बॉक्स ऑफिस बस्ट में यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है. जो पहले आपके पास इंफॉर्मेशन थी उससे यू आर नॉट रियली मच बेटर ऑफ. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आप एज अ ट्री भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्प्लिट, द फर्स्ट डिसीजन दैट यू विल टेक इज whether the number of A-list celebrities is high or low. ठीक है, that is the first step that you're going to take. If this is low, you're going to say it's most likely to be a box office bust. It's most likely to be a flop. ठीक है. If it is high, you move on to your next decision, and the next decision is whether the estimated budget is high or low. If it is low, तो अब यहाँ पे देखें, if the estimated budget is low, तो ये किस में क्लासिफाई हुई हैं ज्यादा? Most of these are critical success. If the estimated budget is high, these are mainstream hits. So estimated budget अगर low है, you classify it as a critical success. अगर ये high है, you classify it as a mainstream hit. ठीक है? So now the question is, how should we split? कि आपको कौन सा split पहले करना चाहिए? And the other question is, when should we stop splitting further? ठीक है? So when we come back next week on Monday, we're going to start from here and try to figure out कि यहाँ पे जो ये classifications हमने different की हैं और ये जो numbers यहाँ पे आपको show हो रहे हैं कि 8 out of 8 आप यहाँ पे correct classifications है इस case के अंदर. यहाँ पे 9 out of 10 are mainstream hits, 1 out of 10 is critical success. इस केस के अंदर यहाँ पे जो इस नोट के ऊपर 10 out of 12 are box office bust, the other 2 are misclassifications. तो इन numbers को हम किस तरह से use कर सकते हैं to get to basically answer this question, how we should split and also when we should stop splitting further. ठीक है?
So in this case हम यहाँ पे तो हमें और split कर ही नहीं सकते because सिर्फ 2 variables थे, but when you have a large number of variables, आपके पास अगर 10 variables होते, so your tree could go on for like 10 iterations. मतलब इसकी depth जो है वो 10 तक जा सकती थी. Should you go all the way or should you stop somewhere in the middle? So that's what we're going to talk about in the next session. Okay, so we'll stop here. Those of you who want to leave, you can leave, and I'll be answering questions now. Okay, so I'll first look at the chat. Before that, okay, so you before what, Talha? मतलब वो मंडे की क्लास है पहले. Okay, yeah, sure, yeah, inshallah. और सेकेंडली सर, ये जो मेन स्ट्रीम हिट नीचे आ रहा है और ये हमारे वेरिएबल्स के मुताबिक हमने खुद ट्री को इस तरह सेट किया हुआ है, ये एल्गोरिदम को किस तरह पता चल रहा होता है, या ये अगला टॉपिक है? ये हमने देखना है. एल्गोरिदम को पता किस तरह चल रहा होता है. एल्गोरिदम बेसिकली आपकी ट्रेनिंग डेटा में देखता है कि इस प्लेट के ऊपर आपकी अगर आप एस्टिमेटेड बजट इस पॉइंट के बाद अगर आपका एस्टिमेटेड बजट लो हो तो आप यहाँ पे बेसिकली ये जो साइड पे आपको शो हो रहा है ना यहाँ पे, दिस इज व्हाट योर एल्गोरिदम इज लुकिंग एट. ठीक है, दिस इज व्हाट योर एल्गोरिदम इज लुकिंग एट. अब यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा कि नंबर ऑफ ए लिस्ट सेलिब्रिटीज कितनी है. अगर वो लो है, दिस इज व्हाट यू हैव इन द डेटा कि क्रिटिकल सक्सेस 1 है, मेन स्ट्रीम हिट 1 है, बॉक्स ऑफिस बस्ट 10 है. तो आपका मॉडल देखेगा सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है, बॉक्स ऑफिस बस्ट की, तो आपको ये बॉक्स ऑफिस बस्ट असाइन कर देगा. अगर इसमें यहाँ पे हाई चूज किया, यहाँ पे अब मॉडल को तीनों 10 10 10 मिल रही है, मॉडल के नॉट चूज फर्दर, तो यहाँ पे वो नेक्स्ट डिसीजन पे चला गया. नेक्स्ट डिसीजन क्या है, वेदर द एस्टिमेटेड बजट इज लो और हाई. फिर उसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या डिफरेंट. तो वो वेरिएबल्स के लिहाज से देख रहा है कि उस वेरिएबल को वेट करने के लिए क्या क्या डेटा पॉइंट्स उस जगह पे आ रहे हैं, डेटा पॉइंट्स को देख रहा है. So, उस वेरिएबल के अंदर क्लासिफिकेशन, उस वेरिएबल की बेस पर जब आप क्लासिफाई करें तो आपके पास ये क्लासिफिकेशंस क्या क्या बनती हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ. उसकी क्लासिफिकेशन नंबर्स देख रहे हैं और फिर उनमें से जो भी मेजॉरिटी कैटेगरी है वो असाइन कर रहे हैं. खैर ये हम नेक्स्ट टाइम ये डिटेल में देखेंगे. अभी दिस वाज जस्ट सम इंट्रोडक्शन के ट्रीज होते क्या है. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस एल्गोरिथम we'll talking about it in the next class. Okay, so the assignments that you have missed earlier, the data chem assignments that you missed earlier, वो सब भी आप जो है 21 जून तक कंप्लीट कर सकते हैं जिन लोगों ने मिस किए हैं. ठीक है, जिन लोगों ने अब तक कर ली हुई थी, we have given all of them full marks. अब जो इस पॉइंट के बाद पिछली वाली असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, they are going to get 20% deduction on that. ठीक है, so out of 10 you could get a maximum of 8 marks if you complete the assignments. So you have until 21st June for this. जो आपकी बाकी तीन जो आपकी लास्ट थ्री असाइनमेंट्स हैं उन्हीं के साथ आपकी अगर आपकी पिछली वाली की मिसिंग है आप वो भी तब तक सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, with a 20% reduction in order to be fair to everyone else जिन्होंने टाइम पर सबमिट किया था. ऑल्सो सर, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो स्क्रीनशॉट्स भेजे थे डेटा कैम्प के असाइनमेंट, आई थिंक वो सर ने कंसिडर नहीं किए, तो मैं उसको दोबारा से ईमेल कर दूँ. Yes, please email both me and the TA as a reminder. ठीक है, वो फिर वो वैसे चेंज वो वैसे रिप्लेस हो जाएंगे. फिर आपके अगर कंप्लीट हैं तो वो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे उसमें. बस मेक श्योर टू ईमेल प्लीज, कि वो ईमेल्स बहुत सारी होती हैं, वो कभी मिस हो जाती हैं, तो जस्ट मेक श्योर टू ईमेल. Okay, any other questions on K-nearest neighbors and decision trees जो जितना हमने अभी तक किया है? सर के नियरेस्ट नेबर में नंबर ऑफ क्लस्टर्स किस तरह ये करता है?
नंबर ऑफ क्लस्टर्स? हाँ मतलब ये हमारे पास जितने सारे आई मीन हमने लेबल्स के थ्रू ये करना होता है कि एक फ्रूट होगा और एक वो होगा। यस, ये प्रेडिक्शन टास्क है ना, ये क्लस्टर्स तो नहीं है। क्लस्टरिंग तो होती है आपकी जो आपका अनसुपरवाइज मॉडलिंग में ना, जो आपकी अनसुपरवाइज मॉडल्स होते हैं जहाँ पे आप क्लस्टर करते हैं, उसमें भी उसमें के नियरेस्ट नेबर्स तो नहीं यूज होता, वहाँ पे के मींस क्लस्टरिंग होती है, और एक और जो है हम करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये दो कवर करेंगे। यहाँ ये तो प्रेडिक्शन टास्क है ना, तो यहाँ पे तो आप आउटपुट को कंसिडर कर रहे होते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि 3 क्लस्टर्स हैं, एक फ्रूट का क्लस्टर है, एक जो है वो ठीक है। वेजिटेबल से क्लस्टर है, एक आपका तीसरा वो जो है प्रोटीन से क्लस्टर है। जो भी जितने भी आपके पास आउटकम वेरिएबल्स हैं, आउटकम की वैल्यूज हैं, वो आपके डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि ये 3 क्लस्टर्स हैं। जो ठीक है अनसुपरवाइज्ड मॉडलिंग लेआउट। होती जो अनसुपरवाइज्ड मॉडलिंग होती है, उसमें आपको पता ये भी नहीं पता होता कि कितने क्लस्टर्स हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता कि वो क्लस्टर्स हैं कौन से। सही। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड। ठीक है सर।